Hi guys. Assalamu alaikum and welcome to Travelsheesh. In today's video, we are taking you to Lauterbrunnen, which has so many waterfalls. See that beautiful yellow train? Yes, it's coming from Wengen, and we will go in this beautiful train to Wengen. Hi guys. Assalamu alaikum and welcome to Travelsheesh, जहाँ मैं सदर, मैं हूँ आतिफ। हम लेकर चलते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पर। आज हम हैं लाटरब्रुनन में और दिस इज़ अ वैली ऑफ वाटरफॉल। यहाँ तकरीबन 72 वाटरफॉल्स हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर सम वाटरफॉल्स, सम माउंटेन्स एंड सम ग्रीनरी। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। हम पहुँचे हैं लाटरब्रुनन में और हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। अभी हमें बताते हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया है, उसके बाद हम आपको घुमाएंगे लाटरब्रुनन। सो गाइस, हमने मंगवाया है लेमन केक, एप्पल केक, क्रोसान एंड हमारी अर्ल ग्रे टी। सो हम करते हैं अपना नाश्ता स्टार्ट और उसके बाद मिलते हैं आपसे बाहर। लेट्स स्टार्ट द ब्रेकफास्ट। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अब हम बाहर निकले हैं, गोइंग टुवर्ड्स द स्टाउब्बाच वाटरफॉल, और जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। So guys, over there you can see every mountain has one waterfall, और ये सारे waterfalls जो हैं makes the weather very moisty, very soothing and very chilly. Fun fact of Lauterbrunnen is that you can see over here 72 waterfalls. Wow! Standing on a field with you and flowers everywhere. So guys, here you can see the voices of the cool sheep. यहाँ आराम से अपने grazing कर रही हैं. So the nature sound is very good over here. I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like yours. Lauterbrunnen is a beautiful valley. It has so much greenery and so much waterfalls. इन waterfalls की वजह से यहाँ हमेशा फ्रेशनेस रहती है. Weather is also very cold over here. अभी ये कि सन निकला हुआ है. Today is a sunny day. कल जो है काफ़ी बादल थे, बट ये है कि आज सन निकला हुआ है, बट द कोल्ड इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ पे चिली तो हो ही रहा है। सो वी आर एंजॉइंग द कोल्ड वेदर एंड द सनी डे एज वेल। What if the wind could spread your love?
What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. And guys, on the back side over there you can see the snowy mountain. That's a Jungfrau region. ये सारा जो है वो Jungfrau region आता है and that's the top of it. और वहाँ लास्ट टाइम हम गए थे, इस टाइम हम जा रहे हैं वेंगन पे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे वेंगन पे। And guys, over there on the back you can see their cemetery. यहाँ लोग आराम सुकून से सो रहे हैं in the flowers beside the mountain and the waterfall. Hi guys, so you can see that beautiful yellow train. Yes, it's coming from Wengen, and we will go in this beautiful train to Wengen. This is the famous Swiss train, so let's have a ride to Wengen. So guys, ट्रेन से उतर कर अब हम वापस आ चुके हैं towards the Wengen और करते हैं अब वेंगन को एक्सप्लोर। 편지를 쓰지 않아 왜 문자 하나에다 담겨. So guys, Wengen is famous for the ski resort. People will come here for skiing in the winter and they enjoy the skiing. So let's see, whenever we come in winters, we'll try our skills for the skiing. 가슴이 용기 내 써내려가 볼게. 사랑해 좋아해 촌스럽지만 이렇게 고백해 멋은 없어도 나 지금 진지해 장난 아닌데 유치해. You don't know 그 어떤 세련된 말로도 대신 못해. You don't know 사실 달려가 너를 안고 싶어. Cause you are my baby. 표정들을 지을까 이 편지를 받을 즈음에 너 상상해보는 너의 얼굴 빨리 보고 싶어. 난 사랑해 좋아해 촌스럽. So guys, if you want to see some beautiful views, find this church. इस चर्च के पास से जो है माउंटेन्स के एंड चारों तरफ के व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं. तो इफ़ यू आर इन वेंगन, फाइंड दिस चर्च एंड हैव सम ब्यूटीफुल व्यूज़. So guys, Wengen has all the beautiful views. People can come here, they can sit in the corner and enjoy these beautiful mountains. और यहाँ पर बैठ के आप अपने घंटों गुजार सकते हैं और आप नहीं थकते बिकॉज द व्यूज़ आर सो ब्यूटीफुल. चलते चलते हमें कश्मीर महल रास्ता नजर
आ गया है जिसकी स्पेशलिटी इंडियन और पाकिस्तानी फूड है एंड देयर हलाल फूड एज वेल। सो चलते हैं और करते हैं वहाँ पे। तो गाइस हम आकर बैठे हैं कश्मीर का रेस्टोरेंट पर और खा रहे हैं पाकिस्तानी फूड। हमने ऑर्डर की है लैम्ब करी, साथ में जो है नान और हमारे राइस। तो हम करते हैं खाना शुरू क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हम इंटरलाकन पहुंच चुके हैं, यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे। तो खाना खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। बस हमने ऑर्डर किया है लैम्ब करी, साथ में है नान एंड द राइस। तो बहुत भूख लगी है, हम कर रहे हैं खाना स्टार्ट। सो गाइस हमने खाना खा लिया है। रेस्टोरेंट था हमारा कश्मीर महल विच इज़ पाकिस्तानी और हमने मंगवाई थी लैम्ब करी, साथ में था राइस पोर्शन, साथ में दो नान, अफान के लिए मैंगो लस्सी और हमने ली 2 चाय। तो टोटल हमारे बने 53 फ्रैंक्स। थोड़ा महंगा है, स्विट्ज़रलैंड तो है ही महंगा, बट ये कि खाना बहुत अच्छा था। सो इफ़ यू आर इन स्विट्ज़रलैंड एंड वांट सम हलाल देसी फूड सो यू कैन कम टू कश्मीर महल। चलें अब चलते हैं हम आगे और जाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन।